Hi everyone. So here we are continuing our lecture with the topic of relationship between Article 13 and Article 368 of Constitution of India. Before we proceed, I would expect you please do check the earlier videos. Otherwise, whatever we have done by far, especially in the past 3 videos wherein we discussed the details of the constitutional amendment, the procedure and how the things happen, along with understanding about the different types of majorities and the details of the Article 13. Because now that you have to understand this relationship between these two articles and that why are they related and what is the political and the historical significance of the same, you definitely need to understand the details of both the articles, which we have done separately, Article 368 also and 13 also. Now the interlinkage has to be done here. So you know about that फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है आपका एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 13 विच सेज दैट द लॉज इनकंसिस्टेंट विथ or in derogation of the fundamental rights. So this article basically talks about that what are the laws if they are not in consistency with the fundamental rights, they will be considered void. So firstly in clause 1 they talk about those laws which were in force immediately before the constitution has come. तो उसके जो जो पार्ट्स जो रहेंगे या जो जो प्रोविजंस रहेंगे, इफ दे विल बी इनकंसिस्टेंट दे विल बी कंसिडर्ड वॉइड. ये तो हो गया. देन सेकेंड क्लॉज में दे आर टॉकिंग अबाउट कि अब जो लॉज बनेंगे द स्टेट्स विल मेक सर्टेन लॉज ऑल्सो. ऐसा तो है नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बने लॉज रहे ओनली दैट विल बी एप्लीकेबल, विल हैव द न्यू लॉज ऑल्सो. So what the states have to take care of while they are making any law, and if they are making any law and it is taking the fundamental rights away, then it will be inconsistent and void, of course. Then it is also giving direction to the state that the state shall not in this only kind of a direction is given that the state shall not make any law. So it is talking about the states expectations while making a law, and then what are the clarifications for the term law and law enforce etc has been taught to you. This is what I did not teach for the reason that I told you कि ये जो आया हमारे पास ये आया 1971 में 24th Amendment Act से. अब ये कहानी थी क्या? ठीक है. So for all of these to understand and to understand the relationship between that article and this article 368 that we have covered by far, firstly I'll take you through a landmark again or a case which will give you an idea about what happened before that, what happened during that and what happened after that. ठीक है, उसको जब हम समझेंगे ना then it will be easier for us to relate these two articles. That landmark thing would be your Golaknath case. ठीक है, and the details of the case I'll be discussing in the next video, so stay tuned for that. I have a whole lecture dedicated for the case itself. You will find it very very interesting. बट हियर नाउ विल लेट्स से जैसे कट ऑफ बोलते हैं ना, तो कट ऑफ के एक पार एंड दूसरे पार और ड्यूरिंग आई मीन ऑन द कट ऑफ जो है, सो उसको हम रख रहे हैं गोलकनाथ केस. तो उसके पहले की कहानी क्या थी. सो लेट्स से यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट हैपेंड इन गोलकनाथ केस. और ये हुआ कब? 1967. As I just said, I'll discuss about the details of the case in another video. ठीक है, अभी हम बस इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे. So here we will understand about what happened before Golaknath case, and then इसके बाद हम समझेंगे what happened after Golaknath case, जिसकी वजह से वो 1971 की कहानी आई. ठीक है, तो 1967 onwards, because गोलकनाथ केस 1967 में आया. हमें कहानी कहाँ की जाननी है? 1971 की. For this to come. So now let's understand before Golaknath case कहानी थी क्या, what was happening. So till this time, अच्छा हम 1950 से आप रफली समझ लीजिए बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट के बाद से बात कर रहे हैं. तो लेट्स से फ्रॉम 1950 टू 1967, क्योंकि गोलकनाथ का कट ऑफ 1967 है. इस बीच में what happened? इस बीच में मल्टीपल केसेस वर देयर, और इन दिस जो एक जजमेंट निकल के कंक्लूजन जो हम फॉलो करते थे दैट यूज टू कम वॉज दैट सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन द रूलिंग दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड, प्लीज सी द वर्ड्स वेरी केयरफुली, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है.
It is getting the right with respect to or under Article 368. So, and that includes fundamental rights also and Article 368 itself also. मतलब if it wants to make any changes in the Article 368 it can do. If it wants to make any changes in fundamental rights it can do. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. देन सेकेंड क्लैरिफिकेशन जो चलता था दैट वाज अबाउट दैट आर्टिकल 13 जो अभी आपको दिखाया कि लॉ का मतलब क्या है क्लॉज 2 में. ठीक है, जो लॉ टर्म है दैट रेफर्ड टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, जो नॉर्मल लेजिस्लेशंस आर मेड बाय द पार्लियामेंट, उसको ही रेफरेंस दी गई है. ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेड बाय पार्लियामेंट. एंड यहाँ पे पार्लियामेंट वाइल कंसिडरिंग द लॉ एज जस्ट अनदर लेजिस्लेशन would act as legislative body. I have given you the differences about legislative and constituent body, so I hope it shouldn't be a problem. And it does not, please focus, does not include the constitutional amendment. क्यों? क्योंकि इसके लिए जो बॉडी है पार्लियामेंट, what kind of function it has to perform? It has to perform a constituent function that is given in the article itself. So that is the power that the parliament needs to have. So therefore it says that before 1967 what was being considered was that Supreme Court had already given in several of the judgments, and this is what was followed, that firstly it is applicable or let's say allowed for the parliament to amend any part of the constitution, and that any includes fundamental right also, article 368 also. कोई इसमें सवाल नहीं है. Secondly, the term law जो हमने यहाँ पे बात की थी कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज देर इज नो क्लियर कट मेंशनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हियर, सो इट वाज गिवन दैट by the Supreme Court that it does not include constitutional amendment. It is only including normal legislations, ordinary legislations which are made by parliament being a legislative body, and no usage of constituent function is there. Now what happened in Golaknath case? तो अभी हम शॉर्ट में पहले इसके जजमेंट देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में व्हेन विल डिस्कस द केस इन डिटेल विल अंडरस्टैंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो. इन गोलकनाथ केस व्हाट हैपेंड, और यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, 6-7 से जो है वो सॉरी 13 नहीं था 11 ही था. ठीक है, तो 11 जजेस की जो बेंच थी, आउट ऑफ विच 6 जजेस, तो 6-5 की जो रूलिंग से आया था, 6 जजेस ने क्या कहा, दे ओवर ruled the previous decisions. What are the previous decisions? You have just seen here these decisions. ठीक है, तो यहाँ पे in गोलकनाथ केस the previous decisions were overruled. What does overruling means? कि अब उसको हम खारिज करके दूसरा जो है वो जजमेंट दे रहे हैं. So here what they decided was, firstly, very important point, that even though there is no point mentioning about exceptioning आर्टिकल 368 एम्बिट, लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो इट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 368. अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से? It says that even if there is no specific mention anywhere about that, we have to categorize, because you might have this question in mind, right? If I had told you this, that the whole question revolves around one major thing, which is that will a constitutional amendment act be considered void if it takes away fundamental rights, or in other words, can fundamental rights be amended? That was the whole question around which the whole question was revolving. So the court has said that in this case that okay, we do not have a clear cut exception saying anywhere that fundamental rights do not fall under the ambit of article 368. Lekin understand the whole idea, understand the whole nature of fundamental rights. So you have to understand that the fundamental rights, because of their nature, cannot be subjected to the amendment process given in article 368. So fundamental rights, due to their nature, can't be subjected to amendment under article 368, even if there is no exception as such given anywhere. Secondly, इन्होंने बोला that if any fundamental right has to be amended, you can just make those sentences, I'm writing the short words,
if you have to carry out any amendment of any fundamental right, then a new constituent assembly must be convened. This was the whole debate earlier also, that the parliament, when does it, it sits as a legislative body to do it, and we do not have a specific body like a constituent assembly or a constituent convention, something like that, which is specifically made for making the constitution only. So it says that अगर आपको fundamental right amend करना है, then a new constituent assembly, like it was made during the freedom struggle and then carried on the work further also. So a new constitutional assembly must be convened to make a new constitution or bring radical changes in that. तो अगर फंडामेंटल राइट चेंज करना है तो आपको एक स्टेप भी बड़ा लेना पड़ेगा. अनदर थिंग वाज दैट दिस अमेंडमेंट पावर विद द पार्लियामेंट was a legislative power, of course. So it was a legislative power, and it is carried on under Article 245, which talks about the legislative power. So therefore it says that a constitutional amendment act was also a law within Article 13(2). Now see the contrast. That is why I gave it in this manner. So understand what the contrast is happening before. So now again you will have the question that what exactly was this Golaknath case all about. That is why I have given a separate lecture on it, and we'll do it in the next class, so that you will have that question ना कि आखिर ऐसा जुडिशरी के सामने क्या आ गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने. what happened drastically something here in this Golaknath case that 67 में they had to overrule the previous judgment जो अभी तक इनके इतने सालों से चल रहे थे. तो earlier they used to say कि पार्लियामेंट को अधिकार है, वो कुछ भी बदल सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट. अब इधर क्या बोला जुडिशरी ने, that even if there is no explicit mention anywhere that Article 368 can be amended, and that includes fundamental right also, but we have to give the fundamental rights that space, that place, because it has that nature that it cannot be subjected to amendment under Article 368. Then यहाँ पे था कि this law which is used in this clause 2 of Article 30, it refers to any ordinary legislation, and that is made by parliament, and the parliament in this case acts as a legislative body, and it does not include the constitutional amendment. Why? Because it says, according to the previous judgment, constitutional amendment, like the process of amending the constitution, is not a legislative but a constituent function, so it shouldn't be used in the term law. Here what the judiciary says कि एक तो अगर आपको फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो फर्स्ट यू मेक अ सेपरेट बॉडी फॉर दैट. You make a separate body which will perform the constituent function, a constituent assembly, which will either make a constitution or radically change it. Another thing what was said about what kind of a power and ordinary legislation it is there. So it says that Article 245 जहाँ हम legislative power की बात करते हैं, so that is the amendment power is also included in that, and because amendment power is also a part of legislative power only, तो फिर तो वो लॉ में यूज हो जाएगा. यहाँ पे तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया गया क्योंकि उसको सीधे बोल दिया गया दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, इसके लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए थी. नहीं है तो लेजिस्लेचर में उसको लॉ में नहीं डालेंगे. बट हियर इट वाज सेड कि नो दिस इज अ काइंड ऑफ और यू कैन से कि दिस इज ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव पावर ओनली. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ की तरह ही काउंट होगा. इट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज अ लॉ ओनली अंडर आर्टिकल 13(2) of the constitution. Now see what does this Article 245 says, so that you are not confused about it कि exactly है क्या उसमें. तो ये पार्ट 11 में बात की गई है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, एंड चैप्टर 1 डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस. तो यहाँ पे बोला गया है इन आर्टिकल 245 दैट व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ लॉज विच कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. So it says that subject to the provisions of the constitution, parliament may make laws for the whole or any part of the territory, and state legislature may make laws for the whole or any part of the state. No law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation. मतलब इसमें normal लिखा हुआ है, इसमें there is nothing as such special written here.
about amendment or something like that. So the Supreme Court in this case said that under this article we will consider, because the parliament is allowed to make laws for the whole territory, or let's say for the part of territory, so we'll say that it includes the amendment also, because that is also a law making only. ठीक है, आप कुछ चेंज कर रहे हो तो. So that was the argument that is given here in the Golaknath case. अब बात आती है कि फिर इसके बाद क्या हुआ. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ. There has been one thing that you will now come across in both the cases, either we do Golaknath or Keshananda Bharti or the other cases, a tussle between parliament and judiciary, and these are the points that you can note down while you have to answer the questions on separation of power. वहाँ पे देखिए टसल कैसे होता है. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर फर्स्टली ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, बट देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कैन ऑफकोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू दे कैन डिक्लेयर कि कोई भी लॉ जो है अगर वो इनकन्सिस्टेंट है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. What does the parliament have in return, like as a power? What they can do, they can come with any amendment act. Coming up with an amendment act is the power with the parliament. So to counter judiciary, parliament can come up with an act, ठीक है, and the judiciary can counter the acts with the help of judicial review by declaring it null and void. This kind of tussle continues to happen, ठीक है, ये पूरे हिस्ट्री में हमको देखने को मिली है. तो यहाँ पर अब क्या हुआ, गोलकनाथ केस में ऐसा जो जजमेंट आ गया, ऑफकोर्स दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट गॉट रेस्ट्रिक्टेड इन अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स इन एनी केस. एंड देन ये भी प्रॉब्लम आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर लॉ के अंडर में आ रहा है, विच मीन्स इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एज पर द लैंग्वेज. ठीक है, तो अब हाउ did the parliament react to it? So here what happened, the parliament tried superseding the judgment of the Supreme Court in Golaknath case, and they amended the constitution. So they brought amendment to the constitution. And amendment कहाँ पर करा constitution में? Article 368 and Article 13 itself. सारी प्रॉब्लम इन्हीं दोनों को साथ पढ़ के आ रही थी. ठीक है, बिकॉज आर्टिकल 368 was about amendment and 13 was about the term law. So they amended both the articles. और ये कहाँ से करा, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से करा? 24th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971. ठीक है, यहाँ पे पास करा. और इसमें क्या बात बोली गई, इसमें बोला गया दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ इट इज पास्ड इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 368 will not be, listen to me very carefully, a law within the meaning of Article 13. Now understand, the two articles that were creating the whole trouble, what did the parliament do in this case? They amended both these articles only. उनके wordings में change करा दिया. This is what the power has. I mean the parliament has the power to do this, right? To make changes in the constitution. वो wordings में change करा सकते हैं. तो दोनों के wordings में change करा दिया. अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि कोई भी constitutional amendment अगर पास किया जाता है in accordance with Article 368, it is not going to be considered as law within the meaning of Article 13. और एक दूसरा चेंजेस क्या किया गया कि आर्टिकल 368 में एक क्लॉज जोड़ दिया गया 3. ठीक है, ये वाला कौन सा था, ये वाला जो था दैट वाज द चेंज इन आर्टिकल 13. यहाँ पे देखिए आपको दिखाया था ना आर्टिकल्स मैंने, दिस आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ के that nothing in this article shall apply to any amendment of the constitution made under article 368. मतलब उसमें लॉ काउंट नहीं होगा. तो एक आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ला दिया गया and clause 3 was added in article 368. And what was that clause 3? If you remember, we have seen here that nothing in article 13 shall apply to any amendment also made under this article. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट. इट मीन्स इसका जो भी लॉ वाला या वॉइड वाला वो सब जो भी वट एवर वर्डिंग्स आर देयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू अप्लाई टू एन अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल. तो अब यहाँ से क्या होना शुरू हो गया कि यहाँ पे इट वॉज वेरी क्लियर कि बिकॉज ऑफ दिस आइडिया यहाँ पे अब कोई भी क्वेश्चनिंग जो है वो नहीं होंगी ऑन एनी ग्राउंड कि इट इज़ टेकिंग अवे द फंडामेंटल राइट, वो बच गया. तो आर्टिकल 13 में भी चेंजेस आ गए एंड आर्टिकल 368 ऑल्सो वॉज changed by this 24th Amendment Act 1971 by the Parliament. Now let's understand that, so now we had all of these tussles going and now let's understand कि क्या जो ये controversy थी on the amendment, that is just stopped to happen after this 24 Amendment Act. Was this Amendment Act the only solution and it gave us
all the probable possibilities कि आगे जाके we will not have any problem? Definitely no. When there is an act, you know how the judiciary can react to it by declaring it null and void. But for that to happen, it has to prove that this is inconsistent with the fundamental rights. Now what happened? Later down, what happened? The validity of this act, validity of this Constitutional Amendment Act, that was 24th Amendment Act, was questioned. इसकी ही वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया. ठीक है, अब क्वेश्चन किया गया या आप बोलो कि चैलेंज किया गया, चैलेंज्ड. एंड वेयर? in the Keshwanand Bharti case. That is why we'll do this case also in detail sometimes later. 1973. So the validity of this 24th Amendment Act was challenged in the Keshwanand Bharti case. अच्छा, हमेशा क्या होता है कि let's say if the judgment of any case, अगर मतलब कोई किसी केस से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जब अगले केस में हियरिंग के लिए जाती है ना, तो द नंबर ऑफ जजेस हैव टू बी मोर. फॉर एग्जांपल जैसे गोलकनाथ केस में 11 जजेस थे. अगर उनसे रिलेटेड कोई भी फैसला आगे के कोर्ट को देखना होता ना, तो जो जजेस का बेंच बैठता वो उस नंबर से ज़्यादा का बैठना था. खैर इन दिस केस द हाईएस्ट पॉसिबल उस टाइम पर जो थे वो 13 जजेस जो हैं उनकी बेंच बैठी थी. डिटेल्स एज आई सेड विल डू इट लेटर. अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड इस केस में जजमेंट में क्या आया. ठीक है, अगेन द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो केशवानंद भारती केस 1973 में जजमेंट में क्या आया कि यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड. ठीक है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी आई वहाँ पे दे अग्रीड कि ओके वी विल अपहोल्ड द वैलिडिटी. सो दे अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th Amendment Act. The act which was questioned or the act which was challenged, it was considered to be okay. It was considered to be valid. Okay, we are telling it is valid by the Supreme Court. And they overruled the गोलकनाथ केस जजमेंट, क्योंकि उसमें ही का सारा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये एक्ट आया था. ठीक है, सो तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी विल नॉट अग्री विथ व्हाट वाज सेड इन द गोलकनाथ केस जजमेंट. तो अब फाइनली जो वर्डिक्ट निकल के सामने आया. बट देन यू विल से कि केशवानंद भारती केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इन्होंने यहाँ पे वैलिड कर दिया, विच मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन डू एनी थिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नो, बिकॉज द स्टोरी इज़ हाफ हियर. Why is the story half? Because उसका आगे का कहानी basic structure doctrine is going to complete. So just focus on what we are telling right now. What we are telling right now, that the validity of this amendment act, which was a response to the judgment in the Golaknath case. ठीक है, Golaknath case 1967. The Supreme Court said what? The Supreme Court said Parliament cannot do anything with the fundamental rights, and if that has to be done, bring a new body. Okay, and here this amendment also is considered as law under Article 13(2), which means if it is considered a law, it can be declared void on the grounds that it is not in consistency with the fundamental right. So now that this was challenged by amending both the Articles 13 and 368, and when this was challenged, केशवानंद भारती केस में the Supreme Court agreed कि okay this is valid, ये सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, and गोलकनाथ केस का जजमेंट जो है वो हम नहीं मानेंगे. लेकिन यहाँ पर जुडिशरी अंडरस्टूड दैट लीगली यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट पार्लियामेंट को वी कैन नॉट गिव द होल पावर ऑल्सो ऑफ डूइंग एनीथिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे केम अप विद दिस यूनिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. दे इंट्रोड्यूस्ड इट हियर एंड सेड कि आप कुछ भी अमेंड कर लो, लेकिन वो फंडामेंटल फीचर्स जो हैं, बेसिक फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए. दिस वॉज द आइडिया दैट इन डिटेल विल डू इन द केशवानंद भारती केस and the basic structure topic. ठीक है, just understand कि how did the judiciary tactically solve the case here, that they agreed कि okay we will agree कि चलो ये वाला सही है, but that also doesn't give you the right, because this was in specific context only ना, this was in specific context to these articles. कोई भी challenge जो होता है वो specific context में होता है, but they then just gave a general thing about कि मतलब ये generally आगे applied हो जाएगा basic structure में. तो उसको हम आगे समझेंगे. तो यहाँ से फाइनल जो है हम कंक्लूजन अगर हमें निकालना है ऑफ दिस अमेंडमेंट थिंग की अधिकार क्या है पार्लियामेंट के पास, वहाँ पे ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ठीक है, इफ़ दैट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इट इज़ नॉट अ लॉ, बिकॉज इन गोलकनाथ केस इट वॉज सेड दैट इट इज़ अ लॉ. तो यहाँ बोला गया इट इज़ नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13. एंड the two clauses that were introduced by 24th Amendment Act, that was clause 4 of Article 13 and clause
3 ऑफ आर्टिकल 368, इन्हीं दोनों को क्वेश्चन किया गया था, तो इनको वैलिड मान लिया गया, ठीक है, एंड दे वर इंसर्टेड बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट. सो द कंक्लूजन केम दैट ओके, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, allowed to be amended under Article 368, and here the validity will not be questioned on the ground that it is taking any fundamental right. इतना बोल दिया गया. Now the question is again that how it is related to the basic structure doctrine. तो अब यहाँ से क्या हो रहा था कि since the Golaknath case, this was also in question that whether outside the part 3, I mean outside fundamental right, is there any constitutional provision which is also immune from this whole process of 368. Immune means कि उसको कोई टच नहीं कर सकता. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि despite of the fact that केशवानंद भारती केस में, बिकॉज इट वॉज नॉट द क्वेश्चन ओनली ऑफ फंडामेंटल राइट्स ना, अभी तक तो फंडामेंटल राइट्स था, सो सेपरेट जजमेंट केम एंड इट वॉज काइंड ऑफ गिवन एज अ सोल्यूशन, बट देन इट वॉज ऑल्सो रेज्ड since Golaknath case only, a kind of question was being raised that okay, this time the matter is about fundamental rights, but what if next time some other important provision of the question will be asked or this will be questioned, then what will be the case? Will the parliament have the right to amend that or not? Then here in Keshwananda Bharti case, the judiciary decided कि let's have this concept of basic structure wherein we will see that all those features of the constitution which forms the core of the constitution or basic in nature, which cannot be altered at any cost, cannot be amended. So you are allowed to amend even the fundamental rights but not at the cost of harming the basic feature. ठीक है, अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दिस, डिटेल में समझेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब और मिलेगा. I hope now you have got the idea, a rough idea about how do we relate Article 13 and 368, and this is the current proposition जो कि उसके आगे चला आ रहा है, that yes, Constitutional Amendment Act will not be considered as law under Article 13. Secondly, these two clauses are valid, and because they are valid, you are seeing that we have it in the Constitution, right? यहाँ पे ये लिखा हुआ है और इसके नीचे कोई ऐसा डिस्क्लेमर नहीं था कि इसको बाद में हटाया गया है, ओके. एंड देन इट इज़ ऑल्सो सेड दैट फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 एंड इट विल नॉट बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ टेकिंग फंडामेंटल राइट, which means it can be questioned on the ground that this is taking away the basic feature or basic structure of the constitution. ठीक है, I hope you get the idea now. So we have seen the relation. If you are liking the video, kindly do let me know in the comment section. Without your feedback, I will not understand how the things are going. Then let's meet in the next video and discuss more about what was the detail of the Golaknath case, and when the right time will come, we'll also discuss the details of the Keshwananda Bharti case. Thank you so much guys. Take care till then. Finish all your pending works. Bye bye. Take care.